Hello and welcome everyone. Welcome back to another video on the boundary line. A lot of cricketing action tomorrow. It's India versus New Zealand, the start of another ODI series. A few of the many in this year. WPL is going on as well. Three matches have been done. Mumbai Indians has played two matches out of the three, and they have lost 1-1. RCB has won the first match, and second match was won by Gujarat Giants. Obviously, before we speak about the Ashes, which was done, we will speak about the ODI series, which is coming up. श्रेयस अय्यर वापस आ चुके हैं स्क्वाड में बट आई वुड से इंडिया इज going with their full squad, just two minus two because Hardik Pandya is not playing because he wants himself to be fit for the T20I World Cup, and same goes for Jasprit Bumrah as well. So otherwise, India is going with a full squad, but New Zealand is a quite I wouldn't say weak but inexperienced squad because पांच या छह तो उनमें जो उनके प्लेयर्स है वो अभी डेब्यू करने वाले ये स्क्वाड में माइकल ब्रेसवेल है उनके कैप्टन and looks like a very newish squad. It was sad to see ऋषभ पंत को इंजरी हो चुकी है आज मैच डे -1 में ही और वो बाहर हो चुके हैं बट इट वुड हैव बीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू कम इन द टीम एंड प्ले बिकॉज यहाँ पे आपको 6 बॉलर्स की जरूरत नहीं थी और 8 नंबर तक बैटिंग की भी जरूरत नहीं थी तो आप ऋषभ पंत को ला के खिला सकते थे वाइट बॉल बिकॉज अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं है वाइट बॉल में तो इट वुड हैव बीन गुड अपॉर्चुनिटी श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल ये दोनों के ऊपर नजरें रहेंगी बिकॉज एक करंट कप्तान है बट उनको और एक फॉर्मेट में से उनका कैप्टनसी नहीं बोलूंगा मैं वाइस कैप्टनसी स्ट्रिप डाउन हुआ है तो उन पे काफी प्रेशर रहेगा बिकॉज इंग्लैंड के बाद उनके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ है बिकॉज T20 टीम से ड्रॉप हो गए वाइस कैप्टन बनाए गए थे बट फैंस का पूरा ये था इंडिया के बैटिंग लाइनअप का टॉप ऑर्डर का टॉप 4 का आपको लगता है कि सबका एक एक सेंचुरी आ जानी चाहिए इस सीरीज में या आपको लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू बी ड्रिवन बाय रोको इन दिस सीरीज एज वेल नहीं आनी तो चाहिए एक्सपेक्टेशन तो होंगे ही पर न्यूजीलैंड के जो नए प्लेयर हैं ना जैसे आपने बोला दैट दे हैव गॉट सम न्यू प्लेयर्स इट्स अ न्यूइश टीम I mean those new players are only good enough to expose our players so right um it can be so a two-edged sword right? They can be really good or they can yeah be really surprising yeah as well true I mean if you remember about William that O'Rourke player William Rook हाँ like yeah. yeah oh yeah Rook sorry so that player was also like he was new player like when he started playing test in India. He was a new player, but then we saw what damage did he do with the our bonus like रोहित शर्मा भी काफी आउट हुए थे उनके bowling में. Hmm. So so yeah, I mean it'll be interesting to see how they play in the ODI. And yes, I mean it'll be good to see Shubman Gill scoring some runs because he has have since the England series, I don't think he has had a good patch. टेस्ट में तो मतलब आई थिंक वेस्ट इंडीज में भी एक ही इनिंग में खेले थे या खेले होंगे 2 इनिंग में पर वो वेस्ट इंडीज थी पर उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे टेस्ट में और फिर वो T20 में नहीं चले ओडीआई में भी नहीं चले थे वो सो मतलब अभी इट्स हाई टाइम दैट ही स्टार्ट स्कोरिंग रन्स और ऐसा ना हो मतलब ओडीआई से भी कप्तानी चली जाए क्योंकि वो आईपीएल के बाद तो मालूम पड़ ही जाएगा कि आपने कौन मेरे को एक मतलब मैसेज किया था कि व्हाइट बॉल का कैप्टन होगा सॉरी आपने मुझे एक मैसेज किया था जिसमें रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर साथ में नेक्स्ट प्रैक्टिस के बाद आ रहे हैं और आपने हमको मुझे बोला कि एक्स कैप्टन एंड द फ्यूचर कैप्टन माइट बी पॉसिबल ये दोनों चल रहे हैं साथ में व्हाई डू यू थिंक सो व्हाई डू यू थिंक शुभमन गिल इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग टाइम कैप्टन फॉर ओडीआई स्पेसिफिकली No, I mean, I understand. I mean, you can't, like, I would want a red ball captain and a white ball captain separately. It makes sense to have that. There is a lot of workload management. We could see that Shuman Gill को आपका experiment T20 में कैसा backfire हुआ. And because of that, I don't know, like, there is, I mean, before it gets too late, I mean, you will need to make some decisions because runs dry out हो रहे जब से उन्होंने कैप्टेंसी ली है टेस्ट में अलग बात थी आप इंग्लैंड जैसी टीम के सामने आप ड्रॉ करके आ गए उसको मतलब आप विन दिखाने का कोशिश कर रहे हो बट द ओनली पॉजिटिव थिंग इन दैट whole series was Shubman Gill only
that he was, but not his captaincy or anything of that sort. Yes, towards the end, मैनचेस्टर आई मीन ओवल में जो मैच था उसमें आपने पुल बैक किया, पर उसमें भी क्रिस वोक्स सपोज इंजर्ड ना होते तो Mm, द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट एट द मोमेंट. mm, So yes, so I mean there are a lot of shortcomings in Shubman Gill, but I'm not saying that उसको टेस्ट कैप्टनसी से ही ड्रॉप कर दो. आप एक वाइट बॉल का एक अलग से यूनिट तैयार करो. आपका ऑलरेडी T20 का आपका मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा एक बार मतलब T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा खत्म. उसके बाद सूर्य mm. कुमार यादव विल मतलब ही विल आई मीन राइट नाउ आल्सो आई थिंक अभी मैंने एक वीडियो देखा था उसमें द वे सूर्य कुमार यादव वाज प्लेइंग आई मीन बहुत बकवास तरीके से वो अभी आउट हो रहा है. सो आई डोंट सी सूर्य कुमार यादव आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप इन February. After that you will need to find a captain. So the Yeah. best time, I mean, if you have got a Shreyas Iyer as a captain, वो वापस IPL जिता देते या कुछ भी मतलब फाइनल तक वापस पहुंचा देते, then Mm, why not make Shreyas Iyer the captain for, I mean, ODI में तो ऑलरेडी वाइस कैप्टन है ही वो, तो mm. उसको इसमें भी ट्राई कर सकते हो आप, मतलब T20 में आप ट्राई कर सकते हो इन प्लेस ऑफ सूर्य कुमार एट नंबर 4. तो ये सब मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इट्स बेटर दैट शुभमन गिल concentrates only on test. White ball, let's keep it with someone else. Yes. Um, it's a downside in a country like India when you have such technically sound batters and you have such great bench strength, and you have players like Rishabh Pant, players like Shreyas Iyer, sometimes roaming the bench also. Players like Shubman Gill not making the cut in one or two formats as well. But we have seen in the past that very hugely talented batters have had been managed really badly by the team management and the coaching staff, like Prithvi Shaw. We have seen in the past where he played some bad and rash shots in Australia. After that, he was not given the good run. We have seen Sarfaraz Khan not being backed up after good performances as well. I don't want that to happen with Shubman Gill because he is definitely a really bright spot for India. Yes, he does not make the merit in the T20 squad. Probably also he doesn't merit to be the ODI captain as well, but he's definitely a really good batter. And if he wants that to continue and he wants to be the poster boy or star boy of what Indian cricket, as others were saying, the YouTube media around us, he needs to fire and fire big time. And same goes with Shreyas Iyer because it's not about the criticism he has faced. He's not, but it's the fitness concerns which he has up and down, and some disciplinary issues where he was pushed out of the team with Ishan Kishan a few years ago, and he needs to prove it and prove it how. So both these players, young players, need to prove their point. And there are two more young players. I wouldn't say conventionally young, but mind say young. Rocco are going to be back again for the first time in 2026. So they have limited opportunities to practice at the international stage. They are playing three ODIs with New Zealand now. Then they will have another three ODIs with England when they come in England this year later. Then they have three ODIs to play with West Indies when West Indies come on home soil in September again. And then they to finish the years they will have three more ODIs in New Zealand again in their home turf. So those are the only opportunities they would have to feature as international cricketers for India and practice and prove their point for the 2027 World Cup if we are speaking about that. हमने काफी विजुअल्स देखे रोहित शर्मा looking very fit and very confident in the nets which he was practicing against the local bowlers in Mumbai. What do you think? Another series and another hundreds for both of them, or you think the new bowlers of New Zealand can surprise them a bit like they did in the Test series last Yeah, year? I mean they can surprise them. I mean I won't. I mean until now they have fared only. Like एक सीरीज इधर उधर हो जाता है तो आई डोंट थिंक इट बी fair enough to judge them straight away कि ये क्या कर दिया ये स्कोर नहीं मार I mean they were not able to score or something. So Mhm. I mean ठीक है मतलब let's see what happens. I would expect them to score hundreds. एक डबल सेंचुरी तो अभी ये इतना लीन बॉडी में रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं
कि अभी mm, एक मार दो, पर देखते हैं मार पाते हैं या नहीं। एक्सपेक्टेशन तो रहेगी, सो या होप फॉर द बेस्ट। yeah. They have showed some good and bright form in the Vijay Hazare Trophy. Both of them have centuries in the couple of matches they have played, and Virat has a 50 as well to go with the century as well. But another work in progress, I would say, is as we did not find the good batters at number three, number two, number six in the test format for Indian, and so far we haven't found the replacement for Ajinkya and Cheteshwar Pujara. Something similar might happen with Jasprit Bumrah and Hardik Pandya as well in the future, when they decide to hang up their boots in a couple of in a couple of years, or maybe whatever fitness concerns Pandya might have, he might play another World Cup, and then India might not have their best all rounder going around in the squad. So this is also an opportunity for the up for grabs for the youngsters like Nitish Kumar Reddy to prove their point if they have that opportunity. He has taken a hat trick in the Vijay Hazare Trophy earlier this year. If he gets a place in the playing 11, he might want to grab that opportunity. Do you think players like Hardik Pandya are just once in a while cricketers, or you think we can still have the potential to build more such players like Hardik Pandya, Chinaj? So I mean that's what they are trying with Shivam Dubé, that वो उसके जैसा कर पाए, बट obviously yes, I mean हार्दिक पांड्या, बुमराह आई थिंक कभी भी एक मिल सकते हैं बाद वापस, Mm, पर मतलब एक चांस है, एटलीस्ट 1% चांस, मतलब 2-3% चांस है कि हम लोग को बुमराह वापस मिल सकते हैं, पर हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर, जैसा ऑलराउंडर क्लच प्लेयर, आई थिंक मिलना बहुत टफ है। mm, वो होता सपोज 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में, mm, वो वर्ल्ड कप हमारा ही था, वो होता तो correct. वो केएल राहुल का वो टेरराइजिंग नॉक देखना नहीं पड़ता हमको, if he would have been there. No, I'm Yeah, serious. I mean, um, like that one regret will be there. Like if Hardik Pandya would have been there, the story would have been different. So yes, I mean it's really tough to find a player like Hardik. yeah. I mean, yes, definitely some the most valuable player for India at this point, and obviously will be the most valuable player for India in the coming T20 World Cup. Speaking about which, England has done with their series in Australia, a dismal series, I would say, in Australia, where they lost 4-1 in the hands of Australia. And um, I would definitely say, hands down, the worst England team to have toured for an Ashes series in Australia, even with having the best batter England has ever produced in Joe Root. Still the worst team. Also, I have seen a lot of articles of booze ball versus bass ball, that they were all boozing around in Australia and stuff. Was there not seriousness? There was an post match interview with Nasir Hussain and Baz McCallum, where he was telling, "Are you going to change the way you're playing or not, or you're going to play this way is the way you want to play?" But Baz said, I would take offense to that, and I don't think I am a person like that." And then he also said in the press conference that he is keen on continuing as a coach. How do you look at it? As we have always drawn parallels with him and Gautam Gambhir, similar kind of personalities, and the results also has been similar. What do you think Baz McCallum's future is in England cricket? No, I mean he needs to go. I mean there is obvious rifts between the coach and the captain. Mm, Um, from the outside, at, at least until the India series, it looked like both of them are like solid, like solid team, but it isn't actually. yeah, Um, like I mean, there was an article in the Telegraph as well about this. So I mean, I don't see any merit of having Brendan McCallum as the coach. I mean, mm, उसने पूरा structurally ही पूरा भी, to be honest, उसने बहुत harm किया है इंडियन क्रिकेट को, mm, जो हिसाब से मेंटालिटी डेवलप की थी अमंग्स प्लेयर्स, गुड yeah, प्लेयर्स लाइक हैरी ब्रूक, वो दे उनका मतलब पूरा ऑलमोस्ट करियर ही खत्म कर दिया, वैसा ही मतलब मेंटालिटी उसने मतलब mm, बना दिया है प्लेयरों का।
और वो मेंटालिटी के हिसाब से वैसे पिचेस प्रोड्यूस अभी होते हैं इंग्लैंड में, पूरे जी। फ्लैट पिचेस, जाओ मारो और टारगेट सेट करो, टॉस जीतोगे तो अच्छा है, तो तुम हम्म, टारगेट तो तुम बोल सकते हो कि वील चेस करके, बट हम्म, सपोज उल्टा दाव पड़ गया तो फिर तुम सीधा हारते ही हो। और ऑस्ट्रेलिया ने उनको उनकी औकात दिखा दी कि हम्म, खेलने से। मेरे को बस यही प्रॉब्लम है, मतलब इंडिया मतलब ऐसी टीम के सामने ड्रॉ करके आ गया और इतना मतलब उसका मतलब इतना खुशी बनाया गया था कि ओ हम लोग ड्रॉ करके आ गए, ड्रॉ करके आ गए। मतलब हम्म, मेरे को समझ में नहीं आता है यार, मतलब ऐसा खराब टीम तो नहीं था, ऐसा नहीं है कि वो टीम ट्रांजिशन में थी, सिर्फ 2 प्लेयर ही गए थे आपके, सिर्फ 2 हम्म, प्लेयर, और yeah, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे 2 प्लेयर। वो 2 प्लेयर होते तब भी उनका कंबाइंड स्कोर, मतलब तुम्हारे जो नए 2 प्लेयर आए थे उन मतलब उनका ज़्यादा होता रोहित और कोहली से, जो हिसाब से फॉर्म में थे वो लोग। और correct. मतलब आप ट्रांजिशन पर ब्लेम करते हो। मतलब ये पूरा मतलब समझ में नहीं आता है क्या कौन सी डायरेक्शन पे इंडियन क्रिकेट एक्चुअली जा रहा है। अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है कि क्या रिव्यू मीटिंग हुआ भी है वो भी नहीं मालूम है हमको। हम्म, उसके बारे में नॉट अबाउट रोको की कम्युनिकेशन और ये सब, वो पूरा डिस्ट्रैक्शन बना दिया था उन लोगों ने, to हम्म, just distract from the actual situation at hand, the test performance which we are having, the kind of yeah, performance we are displaying on the pitch. So मतलब ये सब problems है हमारे में भी। अब उनसे हम लोग हमारा इंग्लैंड जितना बुरा हाल है नहीं, हम्म, बट हम्म, जल्दी नहीं होगा, मतलब इट्स नॉट फार फ्रॉम दैट स्टेट। yeah, कभी ना कभी उनके जैसा बुरा हाल हो जाएगा, बिकॉज इज द सेकेंड टाइम इन अ रो दैट आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर अ हम्म, WTC फाइनल। व्हाट इज हमारे लिए क्या है, मतलब हमारे लिए कुछ ऐसा एशेस है नहीं, हम्म, पिनिकल ऑफ क्रिकेट हमारे लिए WTC फाइनल ही है। तो yeah, मतलब ICC ट्रॉफी एक है, तो मतलब उसमें हम्म, आप नहीं खेल पाते हो, आप होम सीरीज हार जाते हो, ऑस्ट्रेलिया में हार जाते हो वापस। हम्म, और फिर अभी होगा अभी, मतलब अवे साउथ सीरीज अफ्रीका. आएगी, हमें मालूम हम्म, पड़ेगा क्या होता है। तो मतलब हम्म, मालूम नहीं कि what direction the current team management is actually going. yeah. Yes, I agree with that. I think definitely things have been happening as we expected them to happen. That the Test cricket would be brushed under the carpet, and the focus will be shifting to white ball cricket, and then the IPL, and then the T20 World Cup as well. So yeah, India needs to focus on their tests as well. So does England, and so does both the coaches of the both the sides need to make some changes which are actually effective and not just on paper as well. So let's see. That's what we think about the cricket and the scenario which is going on currently. We will be back with the review for the first ODI in Vadodara tomorrow. Do join us for that. Like, share, and subscribe the Boundary Line. Take care. Bye bye.